अनुष्का ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही है? मैंने पीएच स्केल वगैरह बताया था लास्ट क्लास। आई हैव टोल्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट pH scale, H plus ion concentration, OH minus ion concentration and all. कनिष्का ठीक है ना? आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर्ली? यस सर। तुमने कंप्यूटर से ज्वाइन किया हुआ है या उससे माइक से उससे ज्वाइन किया हुआ है, फोन से? सर फोन, लैपटॉप में नहीं चलता जूम क्यों? अच्छे से। सर हैंग? जूम तो चलता जाएगा बट बहुत अटक जाता है, तो इसलिए मैं फोन से करती हूँ। अच्छा, वो लैपटॉप की दिक्कत है या जूम की दिक्कत हो रही है? जूम की। ऐसे कैसे? थोड़ा बहुत पता नहीं सर, कभी कभार हो जाता है, एक बार बस फिक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद नहीं होगा। अच्छा, पासवर्ड वगैरह तो नहीं मांगता ना? नहीं सर। और राधिका, तुम कैसे ज्वाइन करते हो? फोन से, उससे? राधिका का तो माइक, हाँ, सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ, लैपटॉप से। अरे, मैं लास्ट कल की क्लास अपलोड नहीं करी ना, वीडियो देखा तुमने क्या? वो नोट्स वगैरह देख के समझ में आया? का समझ में आया तुम्हें? चलो फिर मैं आज दूसरी चीज करवाता हूँ। इसके बाद आते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। See, Kanishka, in the last class, what I have told, कि पीएच स्केल क्या होता है, एसिडिटी बेसिसिटी पीएच स्केल क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड किस तरह से बिहेव करते हैं, और इनकी अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो मैंने कल बताया था। हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन ऑफ strong acid, this ionic ionic equilibrium cases, and how do we find out the H plus ion concentration and different kinds of calculation that we do. Okay, how do we calculate pH? Actually, on the pH, I did not say anything much. Means I did not give different kinds of question on pH because they're not yet. They are actually asked in combination with the other concepts. But I have explained in the last class how the strong acid and weak acid behave. Okay, weak acid, in short, weak acid behaves like Oswald dilution law that we did now in equilibrium, like that. But strong acids
they completely dissociate like that. The number of moles that you have initially, they will actually completely dissociate and form the number of moles like this. If initially A moles of HCl was there, then it will completely dissociate and it will form A moles of H plus and A moles of Cl minus like that. But instead of this, if weak acid was there, weak acid will behave like it will dissociate partially and follow the equilibrium. Okay, Kanishka? Okay, na? Radhika Okay, knows sure. this. Radhika knows this one. That's she knows this one, and I'm revising it for you only. And other thing that I have told in the last class is a few ways in which we identify acids, bases, and salts. But more importantly, how do we calculate pH value? What is a pH value, and how do we define the strength of an acid? Acidity is usually measured on the basis of H plus ion concentration. Similarly, basicity is usually measured with the quantity of OH minus ion concentration. Correct? Now, in any solution, the product of H plus and OH minus ion concentration is usually 10 power minus 14. In any solution, if the solution is acidic, the number of H plus ions will be more, and correspondingly, the OH minus ions will adjust themselves accordingly, so that the product of both becomes equals to 10 power minus 14. Okay. Usually in any neutral solution, the H plus ion and OH minus ion concentration are equal, and in that case, the H plus ion concentration and OH minus ion concentration will be 10 power minus 7. Okay, clear? But how do we calculate the pH? pH, the P thing that is given here is actually calculated using minus log base 10. If H you are calculating, you are doing minus log base 10 of H plus ion concentration. If you are calculating POH, minus log base 10 of OH minus ion concentration. That's all. Simple thing. So P is defined as minus log base 10. It's just for the sake of calculations only. Because they have defined like that, we are following this one. Okay, clear? Okay, sir. And now a pH scale. After that, I have discussed how a pH scale is defined. pH is a scale on the basis of which the strength of an acid and base is defined. For a neutral solution, we know H plus and OH minus ion concentration is same, but in any solution we have the product of H plus and OH minus ion concentration as 10 power minus 14. We have discussed earlier. So the H plus ion concentration in a neutral solution is 10 power minus 7. This one. That's why the corresponding pH will be 10 power minus 7. So pH is, let me write it. pH will be minus log base 10, 10 power minus 7. It will be 7 for a neutral solution. But when we go further towards the left, pH is 6, means minus log base 10 H plus is 6. So H plus will be, according to the property of logarithms, it will be 10 power minus 6. Clear? But we know 10 power minus 6 is greater than 10 power minus 7. This should be clear to you because many students feel confusing here. Okay, 10 power minus 6 is greater than 10 power minus 7. So that's why H plus ion concentration in pH value 6 is greater than H plus ion concentration of pH 7. H plus ion concentration in pH value 6 solution is more. That's why it is more acidic. Clear hai? Same thing goes for Yes. OH minus. Rest, weak acid, strong acid calculation I have told. But
individually as strong acids. When strong acids are there, they dissociate completely. Weak acid follow the salt dilution law, and then they dissociate partially. But when a combination of strong and weak acids are there, in that case, you have to add the number of moles of strong acid, that number of moles of H plus that came from the strong acid in the calculation. See, strong plus weak acid is there. Strong acid, I had a number of moles, so a number of moles of HCl produced a number of a moles of H plus. According to the weak acid calculation, C minus C alpha is equal to C alpha is equal to C alpha will produce here like this. But I have added a moles here. Why? Because the a moles of H plus are coming from the strong acid HCl. Only this difference you have to be cautious. If only weak acid was present in the solution, calculations are like this. C alpha will be there, only that. But when combination of strong and weak acid are there, you have to add the H plus ion concentration which came from the HCl, strong acid, which is A, in the calculation of weak acid H plus. Okay? That only you have to be cautious. Okay, Kanishka? समझ में आ गया? Yes, sir. थोड़ा डिफरेंट है ये बस. बाकी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे. Now let us move on to the next part. Next part is you try to solve these questions at home after the class. Now we are moving on to the next part. Salt hydrolysis. The salt hydrolysis means breaking down of a salt in presence of water. Now salts can be of four types. Strong acid, weak base type, weak acid, strong base type, weak acid, weak base type, strong acid, strong base type. Now let me explain first the strong acid, weak base type. For the rest, I'll leave the calculation to you only. I'll discuss the first part, strong acid, weak base type. Examples you can take are CSO4, NH4Cl, ZnCl2, CuCl2. Now if you see this CSO4, it is made up of CaOH twice plus H2SO4. This is strong acid, this is weak base. If you take NH4Cl, it is made up of NH4OH
plus HCl. HCl is strong acid, NH4OH is weak base. Okay, like we are doing its hydrolysis. Now take one example. Suppose I have taken NH4Cl. We'll show how the calculations are made. Look very carefully how the calculations are being done. We are trying to hydrolyze it. KH is the hydrolysis constant. It's like equilibrium constant of this reaction. Now it will react, it will form NH4OH plus HCl. Now we can further break it. Remember, this is a weak base, so it does not dissociate like that. It does not dissociate easily. It follows its own law, because you know it follows weak base dissociation follows its own law, that is Oswald dilution law. So we can't be breaking it here. But the strong acid follows its law. NH4Cl is a salt. It will break as NH4 plus Cl minus plus H2O. NH4OH will be as it is, H plus Cl minus. I have broken H plus HCl as H plus Cl minus because HCl is a strong acid. It dissociates completely. Cl minus will be cancelled on both the sides. I can make this equation as NH4 plus water is giving us NH4OH plus H plus. Okay. Now KH equation will be NH4OH into H plus whole divided by NH4 plus into H2. Okay, I have made the equilibrium equation, that's all. This part is done. Now since we did not break weak base, so two parts you have to be very careful while doing the calculation. Salt will be broken. In every situation, salt will be broken. It dissociates. And strong acids, yes, strong base, whatever is strong, gets broken. But the weak acid, weak base, they don't break. Like that only you have to form the equation. Now I'll make equation, because I have not broken the weak base, I'll make an equation of weak base. NH4OH, I'm breaking it separately because it follows its own law. Kb NH4 plus OH minus. Now if Kb I has to calculate, it will be NH4 plus. You will ask me, sir, why didn't you break it there? Because see, that was breaking under the rule of KH hydrolysis. NH4OH follows its own law, it has its own Kb. Okay. Now you'll find it one thing very good, one very interesting thing. If you multiply 1 with 2, KH into Kb, see what you get. NH4OH into H plus cancelled, cancelled.
And one more thing, actually, in this situation, here H2O concentration we take as 1 because H2O is present in very large quantity. So the concentration of H2O is always taken as 1. It is present very large quantity because for hydrolysis very large amount only you have to take. So in this case it becomes 1. So here this H2O we need not write it here. So this becomes equal to H plus into OH minus KH into Kb, but this is ionic product of water, Kw. So KH becomes equal to Kw by Kb. This is one calculation you have done. Now this is not enough. Actually, we want to get the value of pH. Getting na everything. If you have any doubt, ask me, because the next dissociation for weak acid strong base type, you have to do it by yourself. I need to calculate pH, means the H plus ion concentration I should use. So what equation I will be using? Here in this weak base equation, I do not have H plus. Only in this KH equation I have. So I can use this equation, NH4 plus plus H2. What's the equation? NH4OH plus H plus. Always remember this came from NH4Cl. Now, initially the number of moles was C. H2O is very large quantity, so don't bother about it. The alpha amount gets dissociated. Nothing will change. If anything changes, it won't affect its calculation. So KH value we are getting as KH is equal to C alpha. Let me write it. Yesterday I gave one more approximation. Denominator 1 minus alpha you can put as 1 only, because alpha is very small in the denominator. So KH becomes equal to C alpha square. So alpha is equal to root over KH by C. But H plus ion concentration is C alpha. So it will be C root over KH by C. So the answer will be H plus ion concentration you have calculated, which is root over KH into C. But KH you have already got, it is Kw by Kb. If you want to calculate pH now, pH is minus log base 10 H plus, which is minus log base 10 Kw into C by Kb whole power 1 by 2. It will be minus half log. Let me take the minus inside because I will be converting it as pH. Minus log base 10 Kw minus log base 10 C plus log base 10 Kb.
it will be half into Kw is 10 power minus 14. Seven minus half pkb minus half log c. This is pH value you have got. If you want to do calculate pOH, pOH is 14 minus pH. Because you know OH minus ion concentration into H plus ion concentration is always equal to 10 power minus 14. If you apply pH here, it will become minus log base 10 OH minus log base 10 H plus is equal to 14. This is pOH, this is pH is equal to 14. That's why you are using these two equations at your result. Okay. See what you have to remember now. What is long calculation, but how you will understand its logic. In a strong acid weak base type, let me revise it for you. In a strong acid weak base type, I have taken a salt NH4Cl, strong acid weak base type. Salt dissociates because we have to dissociate it. It is hydrolyzing. Weak base does not dissociate when it is formed in the product. Strong acid dissociates. Why weak bases do not dissociate? Because they follow their own law. After dissociating, I have cancelled this and I have made the equation of KH. Okay. H2O concentration I have taken as 1 because H2O is actually very large in quantity and it doesn't, nothing affects it. Okay. Removing some water or adding some water, it's not going to affect. Things remain same because it's very large in quantity. Now coming to weak base dissociation, it following its own law, we have made it an equation of this. Multiplying 1 with 2, I have arrived at an equation KH into KB is equal to KW. Now we have to calculate the pH value of this solution. Means H plus ion concentration I required. H plus ion concentration is present only in this KH equation. So I have used it. Found out H plus, put the value of KH here, and then for pH I have applied minus log base 10. Done the calculation. That's all. Clear? Can you do it? Can you do the same calculation for weak acid strong base type? Right. For weak acid strong base type, मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें. इसके एग्जांपल्स हैं KCN, NaCN, K2CO3, BaCO3. KCN, for example, KOH plus HCN. This is NaOH plus HCN. HCN is weak acid. HCN, weak acid. NaOH and KOH are strong base. So take the example of KCN, break it, do by yourself, है ना? It will form HCN plus KOH. KOH is strong base, it will dissociate completely,
form an equation, and for HCl, because it is strong, it is weak acid, form a separate equation. Here you have to calculate, pOH value, not pH. First question is calculate pOH, then after get the value of pH. First you'll get pOH value. राइट बाय योरसेल्फ. करने के बाद अगर जिसका हो जाए वो मुझे अपनी वर्किंग सेंड कर देना. नहीं हो पाएगा तो फिर मैं करके दिखाऊंगा.
क्या हुआ भाई, नहीं आ रहा क्या? राधिका, नहीं आ रहा? हम्म। कनिष्का, तुम्हारा भी नहीं आ रहा ना? नो सर। उन्होंने एक ही मैसेज किया। नहीं हो रहा, अच्छा मैं करता हूँ। ये है, ये ब्रेक होगा के प्लस प्लस सी एन माइनस में। एच टू तो है ही। एच सी एन तो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वीक एसिड है, प्लस के प्लस प्लस ओ एच माइनस में ब्रेक हो जाएगा। एच सी एन की अलग कहानी चलेगी। यहाँ पे अपन के प्लस को हटा सकते हैं तरफ से। तो के एच की इक्वेशन हमारी ये हो गई। एच टू तो फिर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इसको हम वो यूज ही नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन में। एच सी एन इंटू ओ एच माइनस आयन डिवाइडेड बाई सी एन माइनस इंटू, बस पहली इक्वेशन। वीक एसिड की इक्वेशन बना लो। के ए इज एच प्लस एन माइनस डिवाइडेड बाई एच सी एन। 1 into 2 करोगे, के एच इंटू के ए, मेरे पास क्या आएगा, एच सी एन इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाई सी एन माइनस इंटू एच प्लस इंटू सी एन माइनस बाई एच सी एन। तो सी एन माइनस कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ओ एच माइनस इंटू एच प्लस बचा, जो कि हम जानते हैं के डब्ल्यू होता है। तो के एच इंटू के ए अगेन के डब्ल्यू आ गया। तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के, एक इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पीओएच और पीएच निकालना है। पहले पीओएच निकाल लेते हैं, फिर पीएच निकाल लेंगे। तो हमारे पास ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास। एच प्लस निकालने के लिए अगर यूज करोगे तो एच सी एन वाली इक्वेशन यूज करोगे, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर ओ एच माइनस यू पी एच पी ओ एच निकालना है तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि ओ एच माइनस यहीं पर है, लेफ्ट वन वन इक्वेशन। ओ एच माइनस निकालना है मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, सी एन माइनस प्लस एच टू ओ is giving me HCN प्लस ओ एच माइनस। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी क्वेश्चन बनाऊंगा ना मैं यहाँ पे, इसका नंबर ऑफ मोल्स मुझे सी दिया हुआ है, सी माइनस सी अल्फा। के एच इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी इंटू वन माइनस अल्फा, अप्रोक्सीमेशन कर दूंगा नीचे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अल्फा के एच। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर, सॉरी नहीं नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया ना मैंने। हाँ, सी अल्फा स्क्वायर है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के एच बाई सी आ गया। अब तुम्हें ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो सी अल्फा था, तो हो गया क्या, रूट ओवर के एच इंटू सी। पी ओ एच निकालना है, अच्छा इसको भी और डाल देते हैं। तो ओ एच माइनस आयन क्या बन गया, ओ एच माइनस इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, ओ एच माइनस इज इक्वल टू रूट ओवर
KW/K इंटू सी, क्योंकि मैंने KH की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी ना, KW/K। अब POH निकालने के लिए -log base 10 OH माइनस कर दो, ये POH होता है। -log base 10 KW इंटू C/KA होल पावर हाफ, ये हो जाएगा 1/2 -log base 10 KW -log base 10 C माइनस ऑफ माइनस, हाँ, प्लस log base 10 KA। तो POH इज इक्वल टू हाफ, ये अगेन log base 10 10⁻⁻14 हो गया, माइनस log C base 10 माइनस ऑफ माइनस log K base 10, ये हो गया हाफ। 14 बाहर आ जाएगा, -14 इधर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस log C 10 नहीं लिख रहा अब, माइनस CKA, तो हो गया 7 माइनस हाफ PKA माइनस हाफ log, ये हो गई POH की वैल्यू। तो मैं जो वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूँ ना, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम पीएच कैलकुलेट करेंगे तो पीएच हम जानते हैं, पीएच क्या होता है, 14 माइनस POH। तो कर लो इसको, हो जाएगा 14 माइनस 7 माइनस हाफ PKA, ऊपर वाले में करके दिखाता हूँ, माइनस हाफ log C, ये हो जाएगा 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C, ये हो जाएगा पीएच। सी याद रखना है, इसमें क्या है, सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तुम्हें दिया हुआ है, तो अपन ने ओरिजिनली यूज किया था। और ऐसे ही ऊपर वाले में भी मैंने POH नहीं कैलकुलेट किया था ना, करके दिखा देता हूँ। POH इज इक्वल टू 14 माइनस 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C, तो हो जाएगा तुम्हारा 7 प्लस हाफ PKB प्लस हाफ log C, ये POH होता है। समझ आया कैलकुलेशन? देखो, मुझे पता है जितना इजीली मैं कर रहा हूँ तुम नहीं कर पाए होगे, तुम्हें नहीं समझ में आया होगा। क्लास बस याद, ये सी यहाँ पर ये याद रखना, जो सी यूज किया है ना मैंने, ये है NH4Cl कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में ही दिया जाता है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये जो देते हैं सी। ऐसे ही इधर भी हर एक में जो मैंने सी यूज किया है ना, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। दिस इज कमिंग फ्रॉम NaCN या KCN, KCN से आ रहा है, तो सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये दोनों फॉर्मूले, अब तुम क्या करोगे, घर पे जाके क्लास के बाद इन वीडियोस इसको देखोगे कि मैंने हाइड्रोलिसिस कैसे किया है, इसकी इक्वेशन कैसे बनाई है, क्योंकि जो बॉक्स के जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, इन बॉक्स के फॉर्मूलों के बेस पे तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस यूज होंगे, तुमसे सिंपली पूछा जाएगा कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ CaSO4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पीएच। अब तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, या वीक एसिड वीक बेस का, जो मैं कल करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सॉल्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो उस सॉल्ट के लिए जो पीएच और पीओएच की वैल्यू है, ये वाला फॉर्मूला ये यूज करके उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब तुम लोग इस फॉर्मूले को मेमोराइज करने में ओके हो तो वो मेमोराइज कर लो, नहीं तो ये जो मैंने कैलकुलेशन की है इसको कंफर्टेबल करो, एक दो बार खुद से बिना देखे करोगे
समझ में आ जाएगा और फिर उसके बाद ये फॉर्मूले भी याद रहेंगे। इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ठीक है, फिर एंड करते हैं।